Good evening, students. We are back with live lectures on financial management. We completed investment decisions. In our previous session, we completed the chapter of dividend decision as well. And now, today, we would be starting one of the most important chapters named Management of Working Capital. आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. Let me just share my screen. Again, our process of learning would remain same. First of all, we will understand the meaning of this term, working capital. After that, we will just note down. We will quickly go through what are the learning objectives of this chapter. इस चैप्टर से हम क्या कॉन्सेप्ट्स कौन से कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं. एंड थर्ड, वी विल टेक सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है. Now, before starting this chapter, let me just give you a brief about it. This chapter is divided into 4 parts. You can see my screen, right? Everyone? हम इस चैप्टर को है ना 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे. First of all, we will understand how to calculate the amount of working capital. And technically it is termed as estimation of working capital. ठीक है. WC is nothing but working capital. इसी पार्ट में we will learn a concept called working capital operating cycle. A small concept but important to understand. So first part में we will learn estimation of working capital. That is nothing but to derive the value of working capital that we need for business. Second is a small concept of working capital operating cycle. Second part में हम सीखेंगे receivables management. Receivables are nothing but your customers, your debtors. So how to manage them? And how will we manage our receivables in such a way that it generates maximum net benefit to the company? ठीक है. सिर्फ बिजनेस में सेल करना या सिर्फ बिजनेस में टर्नओवर करना इंपॉर्टेंट नहीं है. रिलीजिंग, गेटिंग द मनी रिलीज्ड फ्रॉम द कस्टमर्स, it is equally important. So we will learn all that stuff under receivables management. Then comes cash and treasury management. Under this part, we will learn how to prepare cash budget for future period. And we will also learn some models on optimum cash management. ठीक है. Last sub part, a very small topic called payables management. इसमें एक ही प्रॉब्लम है, एक ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है. We will see that payables management. So if you see, this all are nothing but receivables is nothing but a component of working capital. Cash is nothing but a component of working capital. Payable, that is your creditors, is also a component of working capital. Are you getting this? There is one more component which I have not mentioned here. Can you guess that क्या हो सकता है? Anyone? I have missed one component of working capital over here, and I have deliberately missed that, purposely missed that. Liabilities. liabilities में short term liability आ गई ना. Creditors. Long term liabilities does not form part of working capital. Working capital, you know, it is CA minus CL. Prepaid expense सब इसमें ही आ जाएगा, but one important component is inventory.
Most of the students had guessed it right. Inventory management. Sir, inventory भी working capital. Stock. Inventory माने stock is also a component of working capital. उसका management नहीं सीखेंगे सर इसमें. तो no, it is that you have already studied in your costing paper. Cost and management. Material costing जो था ना, it was all about managing your inventory. EOQ सीखा था, minimum order quantity, reorder level. It is nothing but inventory management. So that inventory management part is removed from your FM syllabus and it is covered in costing and management paper. ठीक है? So yeah, so first two sessions would be on this part. This is very important. How to estimate the working capital and what is working capital operating cycle. थर्ड सेशन विल बी ऑन रिसीवेबल्स मैनेजमेंट. उसमें भी दो कॉन्सेप्ट हमें सीखने हैं. रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में we have to evaluate the credit policies, the credit period that we give to our customers and select the best one out of it. And second is factoring. So इसमें we will learn two topics: evaluation of credit policies given to customer and select the best one. क्या 30 days का क्रेडिट देना सही है, 60 days का क्रेडिट देना सही है, 0 days का क्रेडिट देना सही है? What is best for the company and in turn what is best for the equity shareholders perspective. Second is there is a small concept called factoring. What is factoring we will see under receivables management. Cash management I already told you, we will learn to prepare cash budget and we will see some cash optimum model, or you can say optimum cash model. Means company should keep how much cash at any given point in time. What is the optimum amount of cash that company should keep with itself? And payables management mein, the topic itself is payables management, managing your payables. उसमें हम सीखेंगे whether to avail the discount from the creditors or not. Payables management में क्या सीखेंगे? Either you utilize full credit period that is given by your suppliers or you make the payment early to them. But अगर early payment करोगे तो they will give some discount to you for early payment. So whether we should go for early payment or whether we should utilize full credit period, we will learn that in payable management. ठीक है? Whether to utilize full credit period or not. So this is just a brief oversight of this chapter, management of working capital. Followed everyone? आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट ए. This is part B, this is part C, this is part D. ठीक है? आज we will start with estimation of working capital. Very important and very practical as well. Working capital, now I will denote it with WC, so don't get confused. I have habit of writing in short terminologies to save some time. ठीक है? Now tell me, you already know, you have learned in lower class that you have learned this working capital in lower class, right? 11, 12 में शायद पढ़ा है आपने. So what have you understood by the term working capital? आपके माइंड में, आपके दिमाग में वर्किंग कैपिटल जब वर्ड हिट होता है तो क्या मतलब निकलता है? See, if you focus on the concept, every part is simple. If you don't focus on the concept, every part is hard. ठीक है? Day to day use CA minus CL, CA minus CL. Someone had asked ना सर कौन सा पार्ट टफ है. सो अपने पे अपने को कौन सा पार्ट इजी बनाना है, कौन सा पार्ट टफ बनाना है. Yes, most of the students had guessed it right, or not guessed but have understood it right.
funds that you need, funds that you need. You means company, huh? For running day-to-day business, for running day-to-day business operations. ठीक है, सो इसको और बेटर समझते हैं थ्रू अ प्रैक्टिकल एग्जांपल. Let's say, just visualize the example. Huh? So let's say today is my birthday. Don't wish me happy birthday. It is not a real birthday. But let's visualize आज मेरा बर्थडे है and I decided कि मैं सबको आज अहमदाबाद में वन ऑफ द बेस्टेस्ट रेस्टोरेंट जो रिसेंटली ओपन हुई है वहां सबको ट्रीट दूं. ठीक है, शाम को आफ्टर द लेक्चर आई एम प्लानिंग टू गिव यू ऑल द ट्रीट. It is a newly opened restaurant. The reviews are good, so I decided कि मैं बाहर ट्रीट दूं. The time was 9 p.m. So everyone, since treat था, भले लेक्चर में आए ना आए, but पार्टी में सब लोग आए. All of you reached exactly at 9 p.m. As soon as you entered the restaurant, जैसे ही आपने रेस्टोरेंट में अंदर एंट्री मारी, you are completely impressed, awestruck, एकदम मुंह खुला का खुला रह गया, because the ambience was superb, the artistic works under inside the restaurant was outstanding, the furnitures and the sittings, everything was number one, the electrical fittings, everything, it was like total aesthetic. So after entering into the restaurant, we all just settled down. The service person gave us water to drink. He handed us the menu card. And now we all decided कि आज सर की ट्रीट है तो सर की जेब खाली करते हैं. ठीक है, so you all decided to order the most expensive dish of that restaurant. ठीक है, so let's say something शाही exotic शाही पनीर something like that. So जैसे ही हमने ये ऑर्डर सर्विस पर्सन को दिया, he just saw the menu card and said कि first of all you need to pay the price of this dish. पहले आप पैसे भरो, फिर I can serve the dish to you. So this is, so we asked, it is a general human mentality, right? कि ऐसा क्यों? So we all asked to the service person कि ऐसा क्यों? जनरली सारे रेस्टोरेंट में तो पहले खाना होता है फिर बिल पेमेंट होता है, आप पहले पैसे क्यों मांग रहे हो? So that guy, that service person guy told me कि सर आप पहले पैसे दोगे ना तो पैसे से मैं रिक्शा लूंगा, नॉट खरीदूंगा, बट आई विल हायर अ ऑटो रिक्शा. I will sit in the auto rickshaw and go to the market. I will buy all the veggies, all the spices, all the batters, or all the, in short, all the raw ingredients that is needed to prepare this dish. फिर सर मैं वही रिक्शा में बैठ के वापस रेस्टोरेंट आऊंगा. फिर सर ये सब जो सामग्री, जो रॉ मटेरियल्स मैं लेके आया, आई विल हैंड इट ओवर टू आवर शेफ हु प्रिपेयर्स द मील फॉर एवरीवन. But sir, chef will first ask the fees, his fees to me before preparing your meal. So sir, उसको भी मुझे, शेफ को भी मुझे उसकी फीस देनी पड़ेगी. And after that, he will prepare your meal. Once he prepares the meal, sir, even I will take my service charge because I am here for my daily bread and butter as well. So I will take my service charge, and only then I will be able to serve the meal to you. Hey, were you visualizing the story? The story ended over here. Huh? The story ended. What is the conclusion according to you in this story? बोलो conclusion. कहानी का तात्पर्य क्या निकला? What is the core content, core conclusion of this story? Can I say that restaurant had money for superb aesthetics, be it ambience, be it artistic works,
be it furniture and sittings, everything. So technically, in accounting and financial terms, can I say this is nothing but fixed asset? Yes or no? So रेस्टोरेंट के पास फिक्स्ड असेट के लिए पैसे थे, but can I say to run the day-to-day business operation of restaurant, that is to prepare and serve the meal to its customers, वो पैसे नहीं थे. Can I say that is working capital? Are you following, everyone? Did you visualize the story? So from this, we can make a conclusion that fixed assets cannot work on its own. In order to run the business smoothly, only fixed assets will not help you. You need additional funds for smooth running of fixed assets. Are you getting this? And that additional fund is nothing but working capital. Understood? So fixed asset, सिर्फ बिजनेस में फिक्स्ड असेट में इन्वेस्ट करने पे business will not start. Business will not run. You need additional funds to run these fixed assets. Are you getting this? And that additional fund is nothing but working capital. Fixed assets and additional funds to run this fixed asset smoothly is working capital investment. Everyone, any doubts in the meaning of working capital? Another example, let's say I want to start a new manufacturing business. Huh? So if I want to start, if I'm planning to start a manufacturing business, can I say मुझे लैंड लगेगी, फैक्ट्री जहां पे मैं बनाऊंगा, उसके लिए फर्स्ट प्राइमरी स्टेप इज आई नीड अ लैंड on which I can construct a factory. Correct? So I will need land. On that land, I will construct a factory building. Are you getting this? So this is a piece of land wherein I will start my manufacturing business. On this piece of land, I will construct a factory building. Just bear with my drawing. Huh? I always used to get D grade in my drawing. Okay, so this is factory building. On factory building, or not on, but inside the factory building, मैं सब जगह machines install करूंगा. So I will need plant and machineries. Yes or no? So these are machineries. Acha, inside the factory building, I will allocate some space for office and admin purpose. So let's say I've constructed office as well. Now all these machineries, office, everything will be connected through electrical fittings. Yes or no? तो बोलो इतना इन्वेस्टमेंट करने पे क्या मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? So I've purchased a land or I've leased a land. I've constructed factory building on it. I have installed all the machineries that were needed for my manufacturing business. एक छोटी सी स्पेस ऑफिस के लिए भी allocate कर ली so that administration of the entire factory goes well. फिर for all the interconnections, all electrical fittings and stuff is also ready. Tell me, मेरा manufacturing process start हो गया? So again, can I say fixed assets cannot work on its own? For smooth running of all these fixed assets, can I say you will need raw materials जो इस machine में जाएंगे? Yes or no? You will need raw materials. In terms or in technical terms, can I say you will need inventory? अच्छा, उस रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आई विल नीड टू हायर सम लेबर्स who will help us in converting raw material to FG. Yes or no? So labor cost and some other overheads as well. So for smooth running of this fixed asset, we need additional funds. That is working capital.
Are you getting this? So raw material cost, inventory cost, labor cost, overheads. This all is nothing but funds that you need for running day-to-day business operations. Understood? So working capital also means additional funds needed for smooth functioning of fixed assets. Students, any doubt in the meaning of working capital? Clear very thoroughly. Can I proceed further? ठीक है, so let's move forward. Let's understand कि सब पार्ट ए में हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है. What content we would learn in part A of management of working capital. So let's just quickly go through. Here part A से क्या? How to estimate the amount of working capital needed. So can you see over here? Let's say fixed asset में for starting a manufacturing business. Let's say fixed asset के लिए we need 50 lakhs and let's say we need 10 lakh in the form of working capital. तो ये 10 lakh कैसे आया होगा? ये 10 lakh how did we derive? That we will learn in this part. Understood? Estimating the amount of working capital. This amount. This. ये अमाउंट 10 लाख जो है वो कैसे आया होगा, कैसे डिराइव हुआ होगा, कैसे वर्किंग, क्या फॉर्मेट बनाया होगा. आर यू गेटिंग दिस? सो फर्स्ट पार्ट इज लर्निंग हाउ टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. सेकेंड, सॉरी, second, we will understand, as I already told you, we will understand the concept of working capital operating cycle. ठीक है, we will understand the concept of working capital operating cycle. What is the duration of operating cycle? We will also understand in this part. How much cycles will be there in a year? We will also understand in this part. ठीक है, last but not the least, can I say once this figure is determined, एक बार हमने ये सीख लिया how to find or how to estimate the working capital needs, can I say next part is to raise that working capital amount, or in technical terms it is nothing but financing of working capital estimated. Are you following? This is a theoretical part, but we will understand that as well. Financing of your working capital नीड्स मीन्स कौन से सोर्सेज से हम ये वर्किंग कैपिटल रेस करेंगे, कौन से सोर्सेज से वर्किंग कैपिटल अरेंज करेंगे. सो दैट विल कम अंडर फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल. बोलो, एनी डाउट इन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पार्ट? क्या सीखना है वो क्लियर हो गया? बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम सम्स तो कर लेते हैं बट उससे सीखते क्या है, दैट ऑब्जेक्टिव यू शुड नो इन योर back of the mind. Okay, so meaning is done, learning objective is done. Now we will move to practical problems. But before starting with practical problems, again I told you FM is all about formats and formulas. अलग अलग चैप्टर में there would be अलग अलग formats and अलग अलग formulas. So even in this chapter, to estimate these working capital needs, there is a format. We are a students of professional course,
So our way of solving should also be in an organized manner. एक format, एक tabular manner में होना चाहिए. It should not be unorganized. Are you getting this? So we will understand the format of estimating the working capital. Understood? And working capital में जो components होते हैं working capital के, जैसे कि inventory, debtors, cash, प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिटर्स, ये सब की वैल्यू कैसे डिराइव करनी है, दैट आल्सो वी विल लर्न. आर यू गेटिंग दिस? सो कैन आई से इन शॉर्ट इट इज नथिंग बट deriving the value or learning to derive the value of each components of working capital. As you all told me, working capital is nothing but CA minus CL, excess of current assets over current liabilities. Correct? Can I say current asset में in every business that you see, there would be inventory, there would be debtors, and there would be cash bank balance. And in all the business organizations, you will see sundry creditors, that is payables, and some other current liabilities like outstanding expense, बैंक ओडी वगैरह वगैरह, शॉर्ट टर्म लोन एक्सेट्रा. ठीक है. सो इफ यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री or if you learn to find the value of receivables, cash and bank balance, you will get the value of current asset because it is nothing but summation of these three components. Likewise, if you learn how to find the value of payables and outstanding expense, you will find or you will get total of current liabilities. So current liabilities को फिर current assets में minus कर देंगे and we will get our working capital estimate. Understood? But हम ऐसे ये arrows बना के solve नहीं करेंगे. This is unorganized way of solving working capital. We will use a proper format, proper tabular form, organized manner. Understood, everyone? So in short, in estimation of working capital, we need to prepare a format and उस format के जो internal components है उसकी value find करनी है. Understanding, students? Everyone, any doubts? Any concerns in life? बोलो, कोई डाउट है यहां तक? नो डाउट्स? ओके, लेट मी प्रोसीड फर्दर. ठीक है. बिफोर स्टार्टिंग विद द फॉर्मेट, इस चैप्टर के कुछ अजम्पशंस है. द हेडिंग ऑफ दिस पार्ट, इफ यू हैव नोटिस्ड ना, द हेडिंग ऑफ दिस पार्ट इज एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल. तो एस्टिमेशन, टेल मी, पास्ट का होता है कि फ्यूचर का होता होगा? एस्टिमेशन किसका करते हैं? पास्ट में जो घटना घट चुकी है उसका एस्टिमेशन होता है कि होने वाले ट्रांजैक्शंस का एस्टिमेशन होता है? कैन आई से एस्टिमेशन इज ऑफ फ्यूचर डेटा and future is very 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 uncertain? Yes or no? Future is full of uncertainty. So whenever uncertainty hits the financial management, we have to take assumptions. Are you following? जहां जहां अनसर्टनिटी होगी वहां वहां उसकी इफेक्ट निकालने के लिए we have to take assumptions. We have to take the help of certain assumptions. Following? So even this chapter has some standard assumptions, and these assumptions will hold true unless otherwise specified. This is very important. Unless some specific information is given, we have to follow this standard assumptions, or it is by default assumed. Are you getting this? जैसे there are 3 standard assumptions in accountancy, correct? But वो standard assumptions कब apply होते हैं? When there is no other specific information given. तब you can directly assume the standard assumptions of accounting principles.
गोइंग कंसर्न था, accrual था, and consistency. These were the standard assumptions of accounting principles. But these assumptions hold true only when there is no specific or other information given. तो सेम प्रिंसिपल विल अप्लाई ओवर हियर. ठीक है, इसमें मैं जो भी assumptions आपको बताऊंगा, they will hold true only when there is no specific information given. ठीक है, so assumption number 1, very important. all activities all activities are spread evenly throughout the year. All activities or all transactions accrue evenly throughout the year. What do you mean by this high fundu English statement? बोलो, आपको इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है? दिस इज वेरी हाई क्लास इंग्लिश स्टेटमेंट. बट क्या लग रहा है, क्या होगा? हैव यू सीन दिस assumption बिफोर इन एनी ऑफ दिस चैप्टर? पूरे साल बराबर होगा. नवनीत इज करेक्ट. सो ऑल एक्टिविटीज अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर मीन्स, लेट्स से द सेल्स और द एंटायर ईयर का सेल्स इज लेट्स से 12 lakhs. ठीक है, पूरे साल का सेल इज 12 lakh. तो बाय दिस अजम्पशन इट मींस जैन में 1 लाख हुआ होगा, फेब में 1 लाख हुआ होगा, मार्च में 1 लाख हुआ होगा, सितंबर में भी 1 लाख होगा, नवंबर में भी 1 लाख होगा, दिसंबर में भी 1 लाख होगा. फॉलोइंग ऑल एक्टिविटीज स्प्रेड इवनली थ्रू आउट देयर. सारे ट्रांजेक्शन्स एग्जैक्टली सेम होंगे. प्रैक्टिकली you will not see this in practical world. Are you getting this? क्योंकि सीजन के टाइम सेल्स ज्यादा होता है, ऑफ सीजन में सेल्स कम होता है. बट सिंस वी आर एस्टिमेटिंग द फ्यूचर, we have to take the help of this assumption. Followed everyone? On the other end, can I say अगर परचेज पूरे साल का 6 लाख है, तो इट मींस जैन में 50,000 होगा, फेब में 50,000 होगा, अप्रैल में भी 50,000 होगा, जुलाई में भी 50,000 होगा, नवंबर में भी 50,000 होगा. ओ सर, जैन में 50,000 है, तो कहना है पर डे परचेजेस वुड बी 50,000 डिवाइड बाय 31. आर यू फॉलोइंग? अगर पर डे परचेज ढूंढना है तो इट विल बी 50,000 डिवाइड बाय 31. सो एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम योर परचेज वुड बी सेम, your sales would be same. Can I say likewise opening stock and closing stock would also remain same, क्योंकि all activities are accruing evenly throughout the year. Are you following everyone? So in absence of any other specific information, all activities, all the transactions, be it stock, be it sales, be it purchase, be it expense, all accrue evenly throughout the year. Followed everyone? So in that, by applying this assumption, your stock, opening closing stock would also remain same. क्योंकि Jan 1 का stock is equal to Jan 2 का stock is equal to Jan 31 का stock is equal to Feb 1 का stock is equal to Feb 28 का stock is equal to November 1st का stock. Are you following this, students? But we have to take care of this term. This is very important. हमें क्वेश्चन में देखना है is there any specific information given? No, then assume this standard assumptions of working capital. Second, estimation of working capital would be for the entire next year. First of all, can I say we are estimating the working capital need? तो एस्टिमेटिंग मींस फ्यूचर पीरियड का एस्टिमेशन कर रहे हैं. तो कौन से पीरियड का? आने वाले 1 साल में हमें कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, दैट वी वुड बी एस्टिमेटिंग. ठीक है, अंडरस्टूड एवरीवन? सो हमारा जो ये वर्किंग कैपिटल अमाउंट आएगा ना, that would mean that would be nothing but interpreted as
the working capital required for the coming year, means for the next year. Followed everyone? See again, practically क्या होता है? All the business organizations, जो बड़े बड़े business organization होते हैं ना, they avail working capital loan from the banks for this working capital amount. ये जो 10 लाख अमाउंट हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए ना, हाउ डू दे फाइनेंस दिस? तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? दे अवेल शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम बैंक्स, या यू कैन से working capital limit, CC limit, cash credit limit. This all is nothing but financing of working capital tools. Following, the bank will never fund you for the entire ईयर का वर्किंग कैपिटल. बैंक पूरे साल का वर्किंग कैपिटल का फंडिंग नहीं करके देती, नेवर. हाउ मच period they fund? So they fund for around 3 to 4 months का working capital needs. Practically, these banks fund you your working capital requirement for the coming 3 to 4 months. They never fund for the entire year. Max to max 6 months. ठीक है? But here we are in academics, so we would be estimating the working capital needs for the entire coming year. ठीक है? Any doubt, student? Any queries? Number 3, we would be estimating the working capital for those business organizations who are into manufacturing industry. See, business ideally can be of 3 types. One is manufacturing business, one is trading business, one is service industry. बट हम यहाँ पे जो एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल करेंगे ना, वो उसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के करेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में. सर ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तो इसका लॉजिक इज वेरी सिंपल. इफ यू लर्न हाउ टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस, तो ट्रेडिंग और सर्विस आपके बाएं हाथ का खेल है. सॉरी, जो भी बाय, राइट, लेफ्ट, एनीथिंग. ठीक है? सो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का आपने सीख लिया, तो बाकी 2 इंडस्ट्री का इट्स जस्ट अ लेफ्ट हैंड थिंग फॉर यू. ठीक है? वेरी इजी, वेरी सिंपल. So that's why all the practical problems that you see in this chapter will be for business organizations that are into manufacturing industry. Understood? Assumptions. We are estimating the working capital needs. Estimation is of future. Future is uncertain. So to remove the impact of uncertainty, we need to take the help of certain standard assumptions. These assumptions will only hold true when there is no other specific information given in the question. If some specific information is given in the question, we have to give the impact accordingly, according to that specific information. Any doubts till here? Any queries, any concerns? Yes, not हाँ, लेफ्ट हैंड. पता नहीं बाएं हाथ को लेफ्ट बोलते हैं, राइट बोलते हैं. आई ऑलवेज गेट कंफ्यूज्ड इन दिस. बट जो भी बोलते हो, बाएं हाथ का खेल है आपका. Okay, so with this background of the meaning of the learning objectives of the assumptions, let's understand the format of estimating the working capital needs. ठीक है? So let's understand कि हमारा जो tabular format है इस चैप्टर का, वो किस प्रकार का होगा. So first of all, we will give heading estimation of working capital required for X limited. ठीक है? Particulars, amount.
Can I say working capital ideally, broadly, it is nothing but CA minus CL? Yes or no? So इस tabular form में भी broadly there would be two items, current assets less current liabilities. तो broad concept would remain same. So यहाँ पे मैं करंट असेट लिखता हूं and it will be subtracted, सॉरी उसमें से हम करंट लायबिलिटी सब्ट्रैक्ट करेंगे. So broad format is ready. It is nothing but current assets less current liabilities. So this is step one. Step two, current assets के individual line items या components लिखते जाओ. Can I say number one, broad line items are inventory? Yes or no? We have debtors. Debtors is nothing but called as receivables. We have cash and bank balance. So these three line items or these three components of current assets you will see in all the business organizations, those who are into manufacturing industry. Fourth, there can be other current assets as well, like prepaid expense, short-term investments, etc. etc. ठीक है. So उसको हम bifurcate कर लेंगे other current assets में. All the prepaid expense would fall under other current assets. Short term investment भी इसमें आ गया. The total of all current asset is called as gross working capital. जैसे आपने टैक्स में सीखा ना, द टोटल ऑफ इनकम ऑफ ऑल द फाइव हेड्स इज कॉल्ड एज ग्रॉस टैक्सेबल इनकम. सो टोटल ऑफ ऑल द करंट असेट कंपोनेंट इज कॉल्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. ठीक है. करंट लायबिलिटीज में you will see sundry creditors, that is payable, in all the business organizations. Correct. Apart from payables, you will also see other current liabilities, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, बैंक ओडी हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स, नॉट दी लॉन्ग टर्म लोन्स. लॉन्ग टर्म लोन डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट्स लेस करंट लायबिलिटीज. मतलब कि जो असेट और जो लायबिलिटी की लाइफ एक साल या उसके अंदर की है. ठीक है. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड ऑल विल फॉर्म पार्ट ऑफ अदर करंट लायबिलिटीज. सो इफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से करंट लायबिलिटी माइनस करते हैं तो वी विल गेट नेट वर्किंग कैपिटल. जैसे ग्रॉस टैक्सेबल इनकम में से यू डिडक्ट डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, तो यू गेट नेट टैक्सेबल इनकम. तो यहाँ पे भी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से इफ यू डिडक्ट करंट लायबिलिटी यू विल गेट नेट वर्किंग कैपिटल. And to this net working capital we will add safety margin, or you can say provision for contingency. स्टूडेंट्स ये क्या होता है? सेफ्टी मार्जिन इज नथिंग बट कैन आई से दिस अमाउंट, ये जो नेट वर्किंग कैपिटल का अमाउंट आया होगा
That would be an estimated amount. Yes or no? That is not the accurate, exact amount of our working capital needs. That would be an estimated amount. Plus minus कुछ भी हो सकता है. So to be on a conservative basis, we add some safety margin. ठीक है? So let's say ये amount 100 रुपये आया. So we are not sure कि हमें exact 100 रुपये वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है कि नहीं. Are you following? We are not sure. This is an estimated amount. So to be on a safer side, to be on a conservative side, we will raise more and we will keep provision for contingency. Let's say 10%. So 10 rupiah and we will raise working capital of 110. So safety margin is nothing but provision for contingency, provision for future uncertainty. Following? उसको प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी भी बोलते हैं, सेफ्टी मार्जिन भी बोलते हैं. डिफरेंट टर्म्स वुड बी यूज्ड इन क्वेश्चंस. एंड द रिजल्टेंट अमाउंट विल बी टर्म्ड एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड और वर्किंग कैपिटल रेज्ड. वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. So can I say broadly the structure of working capital is ready? Broadly, हाँ, this is broad. अभी हमें internal components में जाना बाकी है. But from broader perspective, from bird's eye view, can I say our format is ready? So can I say this looks an organized form? This looks more presentable and it will attract to the CFO of the company. Understood? So broad perspective of format is ready. अच्छा, furthermore, can I say मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो इन्वेंट्री भी 3 प्रकार के होंगे. रॉ मटेरियल होगा. Yes or no? We are estimating the working capital needs of manufacturing industry. The first would be raw materials. And you have also learned कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो there is something called as WIP. Yes or no? And there is something called as finished goods. And there is something called as finished goods. FG. ठीक है. सो अगेन इन्वेंट्री के हमने सब कंपोनेंट्स लिख दिए. RM, WIP, FG. ठीक है. सो अगेन from the broader perspective our format is ready. Not from the broader perspective, total format is ready. Now we have to just learn how to find this raw material का amount, how to find this WIP का amount. We have to now just learn how to calculate this. Are you following? Format is ready. Complete format is ready now. Just learn how to find this. Your job is done. ठीक है. So, are you feeling the flow of this chapter? समझ रहे हो? Now to find all these values, RM, WIP, FG, debtors, payables, we will take a base of source document called cost sheet. हमारा एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट जो हमें कंप्लीट करना है, उसमें जो कंपोनेंट्स की वैल्यू डालनी है, वो वैल्यू फाइंड करने के लिए वी विल नीड अ सोर्स डॉक्यूमेंट. दैट सोर्स डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट द कॉस्ट शीट, और यू कैन टर्म इट एज कॉस्ट स्टेटमेंट और इवन इनकम स्टेटमेंट. Cost sheet, if you remember, you have learned in cost CMA paper, cost and management accounts. Yes or no? You have learned now how to prepare a cost statement, cost sheet. So that would be our source document to complete this format. Following? But वहां आपने जो cost sheet सीखी थी ना, that was on a very comprehensive learning or
वेरी डिटेल्ड लर्निंग। यहाँ पे हम उसका सिर्फ एक्सट्रैक्ट उठाएंगे। एक्सट्रैक्ट मीन्स हमें जितना काम है उतना ही कॉस्ट शीट हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अंडरस्टूड? नॉट दैट एंटायर डिटेल कॉस्ट शीट यहाँ पे नहीं आएगी, ओनली द एक्सट्रैक्ट, ओनली द रेलेवेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट वुड बी यूज्ड हियर। एवरीवन getting the flow? Are you feeling the flow? Feel the flow, तब जाके आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स इजी लगेंगे। ठीक है, सो फॉर्मेट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रेडी। इफ यू वांट टू जस्ट क्विकली गो थ्रू इट, जस्ट टेक अ मिनट एंड जस्ट क्विकली गो थ्रू द फॉर्मेट। सो करंट असेट में इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश बैंक, अदर करंट असेट। अच्छा, इन्वेंट्री, सिंस वी आर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस यूनिट, वी विल हैव थ्री टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, आरएम, डब्ल्यूआईपी, एफजी। तो वो नोट कर लिया। टोटल ऑफ करंट असेट इज कॉल्ड एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से हम करंट लायबिलिटीज माइनस करें तो वी विल गेट नेट वर्किंग कैपिटल्स। बट करंट लायबिलिटी में कौन से कंपोनेंट आएंगे? पेबल्स आएगा एंड अदर करंट लायबिलिटी आएगा। नेट वर्किंग कैपिटल में इफ वी ऐड सम सेफ्टी मार्जिन, that is provision for future unseen contingencies, will get working capital required. ठीक है, so format is ready. Now to enter the values of all these components, we need a source document, and that source document is nothing but cost sheet. Extract of cost sheet, I would say, not the detailed cost sheet that you prepare in costing, but extract only the relevant portion. ठीक है, so our cost sheet we used to start with raw material consumed, so raw material consumption cost, उसमें हम डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड करते हैं। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट ओवरहेड्स, और यू कैन से फैक्ट्री ओवरहेड्स। सो ये तीन हम ऐड करते थे। तो इन योर कॉस्ट शीट यू यूज टू गेट, और यू यूज टू टर्म दिस एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। यस और नो? एंड उस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में just understand the total of all the above three expense is termed as gross factory cost। ठीक है, एंड उस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करते थे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस कर देते हैं। यस और नो? एंड द रिजल्टेंट अमाउंट was termed as cost of production। Are you recollecting the format of cost sheet, students? यस और नो? यही फॉर्मेट होता था। बट आई टोल्ड यू, रिमेंबर द स्टैंडर्ड assumption नंबर वन, unless otherwise specified, all activities accrue evenly throughout the year। और उसमें मैंने बोला था कि स्टॉक की भी जो वैल्यू होगी, ओपनिंग की, क्लोजिंग की, वो भी सेम रहेगी, बिकॉज इट इज accruing same throughout the year। तो कहना है से दिस ओपनिंग WIP and closing WIP will be same। Yes or no? This amount would be same unless otherwise specified। Are you getting this? तो कहना है इसे ये लिखू ना लिखू कुछ मतलब का नहीं है, बिकॉज इट इज सेम। प्लस और माइनस अमाउंट इज सेम। आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट्स? सो कैन आई से दिस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट is now not my gross factory cost, but it can be termed as cost of production। Follow till here? Bolo, any doubts till here?
No doubts. Shall I proceed further? See, I'm teaching you the cost statement that we prepare in FM, taking some assumptions. करेक्ट. फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आप पहुंच गए इन योर कॉस्टिंग. फिर क्या करते थे? यू यूज टू ऐड ओपनिंग एफ जी एंड यू यूज टू सब्ट्रैक्ट क्लोजिंग एफ जी. करेक्ट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ओपनिंग एफ जी एड करते थे, क्लोजिंग एफ जी माइनस करते थे, एंड द रिजल्टेंट फिगर वाज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. Can I say which goods you will sell? You will obviously sell the finished goods. So finished goods के बाद जो बचा, by adding opening FG and by deducting closing FG, जो amount बचता है, we call it as cost of goods sold. Correct? यही होता था आपके कॉस्ट शीट में. But again, standard assumption number one, all activities accrue evenly throughout the year. Can I say plus and minus amount both would be same? So ये लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता. If assumption number one holds true, तो कैन आई से मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख सकता हूं इन एफएम? यस सर, एब्सोल्युटली. So my cost of goods sold, cost of production is my cost of goods sold. Are you following, students? Any doubts, any concerns? फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप क्या ऐड करते थे? यू यूज टू ऐड ऑल द एडमिन एक्सपेंस विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन. सारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, जनरल एडमिन. प्रोडक्शन से रिलेटेड एडमिन होता तो वो यहां ही आ जाता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ही आ जाता. फॉलोइंग, वो यहां कहीं समा जाता. बट हम एडमिन एक्सपेंस, जनरल एडमिन एक्सपेंस विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वी यूज टू ऐड. एंड उसके बाद हम ऐड करते थे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस. Selling and distribution obviously comes once the goods are produced. Are you getting this? And the resultant figure was called as cost of sales. ठीक है. उसमें हम प्रॉफिट ऐड करते थे and we used to get sales. So this is the extract of cost sheet that you will prepare इन एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल चार्ट. ठीक है. हमारी कॉस्ट शीट इतनी बनेगी इफ नो स्पेसिफिक अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन. एनी डाउट, स्टूडेंट? यस, सेलिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एड प्रॉफिट, वी गेट सेल्स अमाउंट. बोलो फॉर्मेट में एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स, एनी क्वेरीज? बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ दिस चैप्टर. अगर ये फॉर्मेट ही नहीं समझा, एंड फॉर्मेट में जो हमने वैल्यू ढूंढनी है वो कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट से ढूंढनी है, वो सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं समझा, देन देयर इज नो वर्थ इन एक्सप्लेनिंग द चैप्टर फर्दर. ठीक है. सो दिस इज फॉर्मेट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड सोर्स डॉक्यूमेंट दैट वी विल यूज टू कंप्लीट आवर फॉर्मेट. ठीक है. टू कंप्लीट, टू फिल, टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टूड? सो नाउ हाउ टू फाइंड द वैल्यूज फ्रॉम दिस सोर्स डॉक्यूमेंट. अब हमने सोर्स डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट भी बना लिया. उसके बाद सर क्या करें? ये वैल्यू कैसे ढूंढे सारी? So we will take a help of numerical problem and we will write here all the formulas as well by taking that numerical problem, and everything will be clear to you. Understood, students? Because अभी मैं फॉर्मूला आपको लिख के दूंगा ना, तो you will not be able to reconcile, you will not be able to like what we say, वो आप मैच नहीं कर पाओगे.
अभी मैं फॉर्मूला लिख दूंगा ना, तो इट विल क्रिएट अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी. सो लेट्स टेक सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, साथ साथ में फॉर्मूलाज डिराइव करते हैं. ठीक है, ये सबकी इंडिविजुअल फॉर्मूलाज है. ये सब की रॉ मटेरियल कैसे कैलकुलेट करना है उसकी फॉर्मूला है, डब्ल्यूआईपी कैसे कैलकुलेट करना है उसकी फॉर्मूला है, एफजी की है, सबकी है. बट वो फॉर्मूला के लिए जो अमाउंट चाहिए हमें, द अमाउंट दैट वी नीड टू पुट इनटू फॉर्मूला इज derived फ्रॉम कॉस्ट स्टेटमेंट. ठीक है, सो लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एन इलस्ट्रेशन फॉर sake of simplicity and see how the formulas are formed. Have the formulas directly. ये सारी फॉर्मूलाज मैं इलस्ट्रेशन के थ्रू समझाऊंगा आपको. दिस इज द फॉर्मेट दैट दे हैव प्रिपेयर्ड. कैन यू सी द फॉर्मेट सेम दैट वी हैव प्रिपेयर्ड. यहाँ पे एक्स आई हैव रिटर्न ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से हम करंट लायबिलिटी माइनस करें तो आई हैव रिटर्न नेट वर्किंग कैपिटल. आफ्टर एडिंग सेफ्टी मार्जिन आई हैव रिटर्न एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड. सो इट इज जस्ट here and there in naming these amounts, but आंसर में कोई चेंज नहीं होगा. ठीक है, फाइनल आंसर वुड बी सेम. Illustration number 3. Yes. This illustration will help you in getting better clarity on how to solve the question of working capital. फॉर्मेट समझ लिया, कॉस्ट शीट भी समझ ली, बट अब वैल्यूज कैसे फाइंड करें उसके लिए टेकिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम is important. On first, everyone come to illustration number 3 of your module. Page number is 9.25. On 1st January, managing director of Norin Limited wishes to know the amount of working capital that will be required during the year. During the year means during the coming year. From the following information, prepare the working capital requirement forecast. ठीक है, forecast means estimate. Production during the year was 60,000 units, and it is planned that this activity would be maintained during the present year. Means कहने से हमारे current year में our production in units would be 60,000 itself. The expected ratios of cost to selling prices are raw material is 60%, direct wages is 10%, and overheads is 20%. इस लाइन का मतलब क्या? इस लाइन का मतलब ये है कि लेट्स से सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 100, then raw material cost per unit is 60% of this selling price. Means can I say it would be 60? Direct wages is 10% of this selling price. So can I say direct labor would be 10? And overheads means factory overheads. And overheads is 20%. Factory overheads means factory cost, factory expense. So overheads, OH would be 20% means 20. Following cost, individual cost to selling ratio. Followed everyone? I don't know what is the actual selling price right now. This is just an example that I gave you. Raw materials are expected to remain in store for an average of 2 months before issue to production. What do you think this statement means? इसका मतलब क्या? Raw materials are expected to remain in store for 2 months before issuing to production. क्या लग रहा है इस स्टेटमेंट का मतलब क्या?
सॉल्विंग फर्स्ट प्रॉब्लम वुड टेक टाइम बिकॉज इसमें मुझे सारे फॉर्मूलाज भी समझाना है, हाउ टू प्रिपेयर द फॉर्मेट वो भी समझाना है, कॉस्ट शीट कैसे बनती है विद वैल्यूज वो भी समझाना है. बट वंस दिस इज क्लियर, आगे के क्वेश्चंस वुड बी स्मूथ, वुड बी मस्का फॉर यू ऑल. 2 महीने का मटेरियल है. You know, it means this is nothing but this statement has two meanings. Both are correct. One is this is nothing but raw material holding period, or you can say raw material storage period. कहने से मैं रॉ मटेरियल मेरे सप्लायर से लाऊंगा, उसके शॉप से मेरे गोडाउन पे लाऊंगा. I will not directly throw it into the machine. I will not directly issue it into the production. आर यू गेटिंग दिस? वो कुछ समय के लिए मेरे गोडाउन में रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल ओनली. आर यू फॉलोइंग? सो दैट इज this 2 months means I am buying the raw material from supplier, but before throwing it into the machine or before issuing it into the production, वो 2 महीना मेरे घर में as it is है. Are you following? So that is raw material storage period, or you can say raw material holding period. Period or time I hold my raw material before throwing it into the machine. Each unit is expected to be in process for 1 month. What does this mean? Each unit is expected to remain in process for 1 month. It means once I throw the raw material into the machine ना, वो within seconds FG में नहीं होने वाला है तैयार. Are you getting this? It will take 1 month time to convert into FG. Are you following? So आज मैंने रॉ मटेरियल अंदर मशीन में डाल दिया तो वो तुरंत विद इन सेकेंड्स एफजी में तैयार नहीं हो जाएगा. प्रोसेस इज टेकिंग 1 month टाइम. आर यू फॉलोइंग? सो कैन आई से दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड? यस और नो? वर्क इन प्रोग्रेस स्टोरेज पीरियड 1 month. करेक्ट? यस. WIP. Finished goods will stay in the warehouse awaiting dispatch to customers for approximately 3 months. Means once the finished goods gets ready, once all मतलब once जो प्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया, एफजी रेडी हो गया, तो क्या कस्टमर्स लाइन लगा के बाहर खड़े ही होंगे कि नहीं नहीं तुरंत ही फिनिश गुड्स रेडी हो गया तुरंत हमें दे दो? ए नो. फिनिश गुड्स वो कस्टमर्स बाहर लाइन लगा के नहीं खड़े होंगे. कहने से फिनिश गुड्स को बेचने के लिए विल टेक सम टाइम. Yes or no? So till that time, I need to store finished goods somewhere in my warehouse or go down. So that is FG holding period. Means before finished goods or before stock of finished goods get converted into sales, I am keeping it in store or in my warehouse for 3 months. Are you getting this? So this is FG holding period. Credit allowed by creditors is 2 months. It means मैं जहां से रॉ मटेरियल परचेस करता हूं वो सप्लायर मुझे 2 महीने की क्रेडिट देते हैं. मींस आज मैंने रॉ मटेरियल खरीदे तो आई विल मेक पेमेंट आफ्टर 2 months. So this is average payment period. If you remember the chapter of ratios, APP, average payment period to creditors. Credit allowed to debtors is 3 months from the date of dispatch. This is nothing but average collection period, ACP. आज मैंने सेल किया मेरे कस्टमर को तो they will not pay on the spot. They will take 3 months time. So I say this is nothing but average collection period, or I can say credit policy of the company. Selling price is 5 per unit. There is regular production and sales cycle. Wages and overheads are paid on the first of each month for the previous month. Can I say this is nothing but outstanding wages and overheads? सर कैसे पता चला? ये पूरे महीने का वेजेस मैं उसी महीने में नहीं पे कर रहा हूं, नेक्स्ट महीने में मंथ में पे कर रहा हूं. आर यू फॉलोइंग? So in short, can I say मेरे December, the last month of the year, December, उसका wages and overheads I would be paying in January.
तो कहना है एज ऑन 31 दिसंबर मेरे बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवरहेड्स आएंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 1 मंथ. Are you following, students? So this is lag in payment of wages and overheads. Lag means outstanding. इस क्वेश्चन में they have not used the term lag, but बहुत सारे क्वेश्चन में they will use the term lag. Lag is nothing but outstanding. Lag means you are running behind. आप पीछे चल रहे हो. Outstanding है. Company keeps cash in hand to the extent of 20,000. So this is nothing but directly they have given the cash and bank balance to us. इसमें हमें जो कैश एंड बैंक बैलेंस चाहिए ना, दिस फिगर दे हैव डायरेक्टली गिवन टू अस 20,000 इन दिस क्वेश्चन. फॉलोड वी हैव टू प्रिपेयर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड्स. ठीक है. सो ऐसे जब आप इस चैप्टर के क्वेश्चन फेस करो तो योर फर्स्ट स्टेप शुड बी प्रिपेयर द फॉर्मेट. सो कहना है मेरा फॉर्मेट तो यहाँ पे रेडी है, मैंने तो बना के रेडी रखा है. ठीक है. तो इसी फॉर्मेट में हम सॉल्व करेंगे. माय फॉर्मेट इज कंप्लीटली रेडी. टिल दैट टाइम यू जस्ट क्विकली प्रिपेयर द फॉर्मेट बाय योरसेल्फ. नाउ वी हैव बिकम एन एक्सपर्ट in preparing this format. So now my format is ready. X Limited के जगह they have used the name of Norin Limited. So यहाँ पे मैं Norin Limited लिखूंगा. ठीक है. Even my cost statement is ready. Yeah? My job is very fast. I do my task very quickly. Okay, students, are you ready with the format? Can we start solving? So first step, prepare the format. Second step, prepare the format of cost sheet. ठीक है. Third step, start targeting this cost sheet. Start targeting this cost sheet. Okay. My selling price per unit is ₹5. So can I say, let's say this is per unit and this is total. Units product produced is 60,000 in a year. Units that will be produced in the coming year would be 60,000. Per unit selling price is given ₹5. Yes or no? तो मेरा टोटल सेल्स कितना होगा? Can I say it would be 3 lakh? बोलो, any doubts, any queries? अब सेल्स से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है. What is given? They have given the ratios of raw material cost, direct wages cost and overheads. Are you getting this? Cost to selling price is selling price, that is per unit. So can I say अगर मेरा selling price is 5 and my raw material cost per unit is 60% to selling price of ₹5, तो मेरा raw material per unit कितना आएगा? 6 5. So this will be 3. This will be 0.5 and this will be 1. So my total production cost or COGS would be 4.5. तो अब मैं पर यूनिट में लिया, मैं टोटल फाइंड कर सकता हूं. दिस वुड बी 180, दिस वुड बी 30, दिस वुड बी 60,000. करेक्ट. So 180 plus 90, 270. Are admin expense and selling expense given anywhere separately? So no admin and selling expense की information is given. So we will take it as nil. Followed. Admin expense, selling, distribution expense की कोई information दी नहीं है. So we will take it as nil. So my cost of sales per unit would be 4.5 and total it would be 2,70,000.
per unit sale is 5. So my total sale comes to 3 lakh. So when I say my profit, which is balancing figure, 0.5 per unit will be my profit and total profit would be 30,000. तो बातों बातों में हमारा कॉस्ट स्टेटमेंट तो यूं ही रेडी हो गया. Hey, are you following this? Any doubts in cost statement? Any doubts till this point? Bolo. Any queries? No, sir. Now, with the help of this cost statement, we have to fill in the values in our main statement. यहाँ पे हमें सब values लानी है. We will take the help of cost statement. ठीक है? So see how we proceed. Can you all tell me how much is the total raw material consumed? Total raw material consumed. It is 1,80,000. Just see this cost statement. It is 1,80,000, correct? And this raw material consumption is for entire 12 months. Yes or no? For entire 12 months, my raw material consumption is 1,80,000. Now, interpret this 2 months is nothing but my raw material storage period or the time I hold my raw material in the godown. This was interpretation number 1. From this interpretation, we will move to interpretation number 2. Interpretation number 2 of this statement is if the total raw material consumption for entire 12 months is 1,80,000. Up to 2 months of my total material consumption, again I am repeating, up to 2 months of my total raw material consumption or proportionate to 2 months of my total raw material consumption is my stock of RM. Are you following? Proportionate to 2 months of this raw material consumption is my stock of RM. Are you following? This is interpretation number 2 that we will use in calculation. पूरे साल का my raw material consumption is 180, but proportionate to 2 months, it is in the stock. It is in the form of stock. This is how you interpret this statement of raw material in store for 2 months. In store means in stock, raw material in stock. Are you following? So can I say this comes to how much? 180 into 2 by 12. 30,000 आ रहा है? 30,000? Yes or no? So this 30,000 is nothing but my stock of RM. यहाँ पे हमें जो इन्वेंट्री की वैल्यू डालनी है ना रॉ मटेरियल की, that is 30,000. Are you following? So total raw material consumption in the entire year of 12 months is 180. But question says proportionate to 2 months of this total is your stock of raw material. तो proportionate का amount कैसे आया? So can I say by this logic we do the cross multiplication and interpolation? Yes or no? अच्छा यही 30,000 की मुझे अगर फॉर्मूला बनानी हो, if I want to devise or derive the formula for this logic, can I say my stock of RM is nothing but raw material consumed multiply by raw material holding period, that is RM holding period, divided by 12. Are you following this? अगर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की इस लॉजिक से फॉर्मूला बनानी हो तो फॉर्मूला क्या बनी? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,80,000 into this 2 months. What was this 2 months? This was nothing but raw material storage period or holding period.
divide by 12. What is this 12? Entire year in months. अगर एंटायर ईयर इन डेज करना हो तो 365 से डिवाइड करना. अगर एंटायर ईयर आपको वीक्स में लेना हो तो डिवाइड बाय 52 करना. फॉलोड एवरीवन? सो बातों बातों में कैन आई से वी डिराइव द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल. फॉर्मूला क्या बनी? कैन आई से रॉ मटेरियल का स्टॉक, दिस इज रॉ मटेरियल स्टॉक. हाँ, हम इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे. सो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज नथिंग बट रॉ मटेरियल कंजम्पशन. Raw material is always, stock of raw material is always based on raw material consumed into RM holding period. HP is holding period. Huh? I told you I like to write it in short terminology. Two reasons. One is constraint of space and one is constraint of time. Divide by 12, 365, 12. Sorry, 52. Followed? So this is the formula to calculate stock of RM. Understood? So इस formula से हमारा 30,000 आया stock of RM. हाँ, वो आएगा आगे. RM, WIP, FG के बीच कितने लाइन का गैप रखना है ना, वो अभी हम सॉल्व करेंगे ना, तभी डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि कितना गैप रखना है. ठीक है, बट फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन रॉ मटेरियल का स्टॉक. Yes, now you can write directly in the direct answers in the exam. हाँ, बट ये कैलकुलेशन ऐसा शो करने का, डोंट राइट द फॉर्मूला बट शो द कैलकुलेशन दैट 180 into 2 by 12, ये शो करने का. If you don't write the formula, that's fine. Formula is for your understanding, for your quick calculation. So if you don't write the formula, that's fine, but you need to show this calculation. Huh? फिर क्या लगेगा अगर ये कैलकुलेशन भी, इफ यू डोंट शो, इट फील्स दैट यू हैव मक्ड अप दिस क्वेश्चन, रट्टा मारा हुआ है. So stock of raw material, any doubts students, any concerns, any queries? आगे बढ़ू अब WIP में. Clear? Okay, now let's move to WIP. This was raw material. See, this all is explanation part. Huh? This all now what I'm explaining to you will not be forming part of your solution. This is just conceptual explanation. Part 2 WIP. जैसे raw material is based on raw material consumption, जैसे fixed goods is based on cost of goods sold, वैसे WIP is based on cost of production. Are you getting this? So can I say, taking the above base of this formula, stock of WIP ideally क्या होना चाहिए? Can I say it should be nothing but cost of production multiplied by WIP holding period or WIP process period or WIP storage period divided by 12, 365, 52. Yes or no? Understood students? बस यही बेस, यही फॉर्मूला का बेस लिया. जैसे RM is based on raw material consumption, WIP is based on cost of production. बाकी सब लॉजिक सेम. Are you following students? But can I say ये cost of production जो अमाउंट है, इसका ब्रेकअप क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ब्रेकअप क्या है? Can I say cost of production is nothing but summation of these three costs? Yes or no? Summation of these three costs. Everyone, are you following? See, pay attention. Huh? Ekdam, I need your careful attention for this part because WIP is a tricky part जहाँ mistake होती है students की. Little tricky. So we know that WIP is based on cost of production.
So ideally the formula for calculating WIP stock should be cost of production into WIP storage period divided by 12, 365, 52. But we know that cost of production is nothing but sum of raw material consumed, direct labor and factory overheads. So यहाँ पे I can write it as raw material, labor, overheads. ठीक है? बिकॉज कहना इसे जो प्रोसेस में होगा, थिंक लॉजिकली एज वेल, जो प्रोसेस में गुड्स होंगे मेरे, वो प्रोसेस में क्या क्या होगा, रॉ मटेरियल होगा एंड लेबर एंड ओवरहेड्स भी उस पे काम कर रहे होंगे बिकॉज इट इज अंडर प्रोसेस. सो प्रोसेस में ऑल थ्री एलिमेंट्स वुड बी इंक्लूडेड. रॉ मटेरियल तो अंदर डाला हुआ ही है, बट वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए कुछ लेबर लोग काम कर रहे होंगे. सो लेबर कॉस्ट प्रोसेस में आएगा एंड अदर फैक्ट्री ओवरहेड्स भी प्रोसेस में आएगा. यस और नो? सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स RM, लेबर, ओवरहेड्स. ठीक है? एंड लेबर एंड ओवरहेड्स का टोटल is technically called as conversion cost. कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. तो वो कौन कर रहा है कन्वर्जन का काम? कहना है इसे लेबर कर रहे हैं, ओवरहेड्स कर रहे हैं. सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कन्वर्जन कॉस्ट. दिस टर्म यू हैव लर्नड इन कॉस्टिंग. ओके, सो कहना है इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कॉस्ट आएगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नथिंग बट टोटल ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस लेबर प्लस ओवरहेड्स. यस और नो? तो कहना है फॉर्मूला शुड बी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू WIP होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12, 365, 52 प्लस लेबर इनटू WIP होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12, 365, 52 प्लस ओवरहेड इनटू WIP होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12, 365, 52. Well, any doubts? So I have just bifurcated this cost of production into 3 sub parts. ये bifurcation, ये cost of production का total कहां से आया? तो ब्रेकअप किया मैंने एंड ये बाकी का फॉर्मूला एज इट इज रखा. ठीक है? ऐसे भी लिख ही सकता हूं ना, आंसर तो सेम ही रहेगा. तीनों का ऐड करके कर सकते हैं कि नहीं, इसका आंसर भी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा. एज ऑफ नाउ जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग. एज ऑफ नाउ ब्रेकअप करके करो. मैंने कुछ पर्पस से ये ब्रेकअप, ये स्पेस ज्यादा रखी है. देयर इज सम लॉजिक बिहाइंड कीपिंग दिस मोर स्पेस बिटवीन WIP एंड FG. रॉ मटेरियल और WIP के बीच देखो मैंने स्पेस ही नहीं रखी है. तो ऐसा भेदभाव क्यों किया है? उसके पीछे कुछ कारण होगा, कुछ लॉजिक होगा. ठीक है? वो लॉजिक क्या है? दैट सस्पेंस विल बी रिवील्ड इन सम टाइम. बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट डू द ब्रेकअप, डू द बाइफर्केशन एंड राइट इट अकॉर्डिंगली. सो WIP में हमें पता चला कि WIP इज नथिंग बट बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में RM होता है, लेबर होता है, ओवरहेड्स होते हैं. इसको हम WIP होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12 करेंगे. लेबर को भी हम WIP होल्डिंग पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड बाय 12 करेंगे बिकॉज एंटायर फैक्ट्स इज गिवन इन मंथ्स. लाइकवाइज ओवरहेड्स को भी मल्टीप्लाई बाय WIP होल्डिंग पीरियड करेंगे, डिवाइड बाय 12 करेंगे. यस और नो? सो टेल मी what is RM into WIP holding period into divided by 12? Can I say this is nothing but raw material is 1.8 lakh. How much is the WIP holding period? Each unit is to remain in process for 1 month. Can I say यहाँ पे 1 month होगा? This is not my raw material का stock. Here again student do error. यहाँ पे raw material होल्डिंग पीरियड ले लेते हैं गलती से. दिस आई एम नॉट फाइंडिंग रॉ मटेरियल का स्टॉक, दैट इज डन ऑलरेडी. दिस इज WIP का स्टॉक. WIP के स्टॉक में रॉ मटेरियल की अमाउंट कितनी है वो फाइंड कर रहे हैं. आर यू फॉलोइंग? सो फॉर दैट वी नीड WIP स्टोरेज पीरियड.
So here don't do error, don't do mistake and take 2 months. ठीक है. WIP प्रोसेस में रॉ मटेरियल कितना टाइम रहेगा, तो वो 1 मंथ ही रहेगा. Followed. So here we will take 1 month into 1/12. How much it is coming? 15,000. So can I say this is nothing but raw material inside the WIP stock? Are you following? जो WIP का टोटल स्टॉक मिलेगा ना हमें, उसमें से रॉ मटेरियल कंपोनेंट कितना, सो इट इज 15,000. दिस इज हाउ यू इंटरप्रेट. सो दिस कम्स टू 15,000. ठीक है. लेबर कॉस्ट इज, लेबर कॉस्ट वॉज 30,000. लेबर कॉस्ट वॉज 30,000 इंटू 1/12 करेंगे तो WIP के स्टॉक में लेबर का अमाउंट कितना है, तो 2,500. ओवरहेड कॉस्ट वॉज 60,000 इंटू 1/12. तो WIP के स्टॉक में ओवरहेड्स का अमाउंट कितना है, तो इट इज 5,000. एनी डाउट स्टिल हियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट स्टिल हियर? 5,000. सो माय टोटल WIP स्टॉक हम गिने तो कितना आ रहा है, 22,500. करेक्ट? Everyone followed? Any doubt still here? So my WIP का स्टॉक देखूं मैं, तो it is nothing but can I say WIP is based on this 2,70,000? Yes or no? So it is nothing but 2,70,000 into 1/12. Correct? करो 270 into 1/12. 22,500 आ रहा है. Everyone? Yes. तो सर ऐसा बाइफर्केशन क्यों करवाया, अब मैं समझाता हूं. Now before I explain you this logic, let's solve FG stock. Let's solve FG stock. ठीक है. Following the same principle, FG stock is nothing but instead of raw material consumption, instead of cost of production, FG is based on COGS, correct? So FG stock is nothing but COGS into FG holding period divided by 12, 365, 52. Understood? Raw material, so it is based on raw material consumption. WIP based on COP, cost of production. Finished goods based on COGS. So with the same logic, with the same principle, I've derived the formula of FG. Correct? So यहाँ पे मैं FG की formula लिख दूं. FG is nothing but COGS into FG holding period divided by 12 for this question, because everything is given in months. Days में दिया है तो 365 से डिवाइड करना, वीक में दिया है तो 52 से करना. Any doubt still here? Now, how much is my cost of goods sold? See the cost sheet. Cost sheet में हमने बनाया ना cost of goods sold. Oh sir, it is equal to cost of production 270. So ideally it should be 270 into FG holding period. How much is FG holding period given in the question? 3 months. So 3/12 करेंगे तो कितना आया? 67,500. So this is my value of FG stock when FG holding period is 3 months. इसका लॉजिक सिंपल ये है, पूरे 12 months का COGS is 2,70,000. तो proportionate to 3 months of total COGS, proportionate to 3 months, it is my FG stock. Are you following this? So 3 months का कितना? So it is nothing. The logic is this cross multiplication. Everyone? But ये cross multiplication का logic हमने already समझ लिया है. So I have directly created a formula for you. But formula का logic is this only, a cross multiplication. For the entire year, my cost of goods sold is 270. So question says proportionate to 3 months is my FG stock. तो proportionate to 3 months value कितनी? तो it is 270 into 3/12.
Followed, students? Now, for the time being, see in this question, my FG came to 67,500, correct? तो यहाँ पे मैं FG में 67,500 लिख दूंगा. कहाँ गया? 67,500 लिख दूंगा. But for the time being, let's assume कि जो WIP होल्डिंग पीरियड था ना, उतना ही मेरा FG होल्डिंग पीरियड है. So let's assume for the time being, for understanding the concept, let's assume कि FG होल्डिंग पीरियड भी मेरा 1 मंथ है. तो कहना है ऐसे यहाँ पे 270 इंटू 1/12 आता. तो कहना है इसे ये FG 22,500 आता. Everyone, yes or no? Correct? Any doubt still here? Now the game starts. Now pay a very careful attention. एकदम ध्यान से समझना. So in short, if my FG holding period is equal to my WIP holding period, my amount of WIP which came to 22,500, yes or no, is same as my amount of FG stock. बट दोनों के बीच कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए. बिकॉज WIP, इफ वी गो बाय द मीनिंग ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड FG, WIP सेमी फिनिश्ड गुड्स, FG इज कंप्लीटेड गुड्स. तो दोनों के स्टॉक की वैल्यू सेम कैसे आ रही है? कुछ तो गड़बड़ हो रही है दया. आर यू फॉलोइंग? देयर इज सम गड़बड़ हैपनिंग. Ideally, WIP is what, if we understand the meaning, literal meaning of WIP and FG. WIP is semi-finished goods. It is something above raw material, but it is something less than FG. And FG is the completed goods, which is ready to sell. Are you following? तो दोनों के बीच कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए. एंड हम तो कोई डिफरेंस नहीं ले रहे. Why? Because both the base, see, it is over here. WIP we are taking base of COP. FG we are taking base of COGS. Both are same. तो दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी. स्टॉक की वैल्यू सेम ही आएगी. Are you understanding my problem? What problem I am facing? The problem here I am facing is both are throwing the same value, even though both have different meanings. Are you following, students? यहाँ पे गड़बड़ हो रही है. गड़बड़ क्या हो रही है कि FG के स्टॉक की वैल्यू एंड WIP के स्टॉक की वैल्यू सेम आ रही है, इवन दो बोथ आर मेंट डिफरेंट. दोनों का मतलब डिफरेंट होता है. डिफरेंट इन यूनिट्स. यूनिट्स इज 60,000 ओनली. Difference is, now let me explain you. See, let's say I am into, again visualize, let's say I am into manufacturing of this shirt. तो कहना है इसे अगर WIP ऑफ शर्ट देखूं तो उसमें कुछ बटन्स रह गए होंगे. दिस पॉकेट वुड बी लेफ्ट, दिस कॉलर वुड बी लेफ्ट. यस और नो? दिस वुड बी माय WIP. अ कंप्लीट शर्ट with all the buttons stitched, with the pocket stitched, with collar stitched, it is FG. But incomplete shirt, pending to stitch the buttons, pending to stitch the pockets, it will be called WIP. So when I say there would be a difference in percentage completion, yes or no? FG is goods that are 100% complete in all the aspects. मतलब सारे शर्ट में बटन भी लग चुके हैं, पॉकेट भी लग चुका है, कॉलर भी लग चुके हैं, स्लीव्स भी लग चुके हैं. But WIP is something which would not be 100% complete. Yes or no? Something less than 100% complete. Yes or no? Buttons बाकी है, कॉलर्स बाकी है, स्लीव्स बाकी है, something like that. Yes or no? So difference between FG and WIP lies in percentage completion. Are you following? Everyone?
Understood? So this FG, which is based on cost of goods sold, is 100% complete. Are you getting this? But ये जो cost of production है ना, the total of these three will not be 100% complete. It would be something less than 100%. Let's say 60, 50, 50. और let's say 80, 90, 90. तो अब जाके दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया. Now it is correct logically because WIP is something which is not 100% complete. But FG has to be 100% complete. तब जाके वो FG बना है. So now this percentage completion clear all the aspects over here. Yes or no? So can I say WIP में ए अगर FG में हम ये 100% मल्टीप्लाई करें ना करें आंसर तो यही आएगा. Yes or no? Are you understanding? If 67,500 with 100%, you will get 67,500 only. If you don't write this percentage completion under finished goods, again answer would remain same. But WIP में हमें percentage completion लिखना होगा. Are you following? So that we can create some difference between WIP stock and FG stock. Are you following? So कहने का conclusion इतना है that in case of solving WIP stock, you have to multiply it with percentage completion. Are you following? Understood? And this percentage completion would be given in the question. कि रॉ मटेरियल का परसेंटेज कंप्लीशन कितना है, लेबर ने अपना कितना परसेंट काम कर चुके हैं, ओवरहेड्स का कितना कंप्लीशन हो चुका है. गेटिंग दिस क्लैरिटी? अंडरस्टूड? बट सर इस क्वेश्चन में तो ये परसेंटेज कंप्लीशन नहीं दिया है. तो इन एब्सेंस ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन there is standard assumption of percentage completion which is 100, 50, 50. Followed? If question is silent about percentage completion, this is the standard assumption that is used in the industry practice and that is used by our institute as well. अब समझा कि ये तीन क्यों ब्रेकअप देना जरूरी है. Are you following? We cannot just write cost of production over here. टोटल नहीं लिख सकते बिकॉज रॉ मटेरियल का परसेंटेज कंप्लीशन अलग हो सकता है, लेबर का अलग हो सकता है, ओवरहेड्स का अलग हो सकता है. फॉलोड? अब समझा कितनी स्पेस किस में छोड़नी है. एफजी में ऐड कर सकते, क्या ऐड करना है. एफजी में तो इट इज 100% कंप्लीट ना, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 100%. 100% लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, आंसर वुड रिमेन सेम. बट व्हाई डू यू वांट टू ऐड इन एफजी? तीनों अलग अलग क्यों करना है? ये अलग अलग मैंने इसलिए किया क्योंकि दिस परसेंटेज कंप्लीशन कैन बी डिफरेंट. अगर परसेंटेज कंप्लीशन इज सेम देन यू कैन डायरेक्टली राइट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. देन डोंट जस्ट इंक्रीज योर सोल्यूशन की साइज. यहाँ पे तो कहना है COGS इज नथिंग बट अगेन टोटल ऑफ दिस थ्री कंपोनेंट्स, बट दे ऑल आर 100% कंप्लीट एज फार एज एफजी इज कंसर्न. तो सीधा COGS लिखो ना. Why you want to unnecessary do more, add more in your solution? WIP में करना इसलिए जरूरी है बिकॉज तीनों का परसेंटेज कंप्लीशन अलग हो सकता है, दैट्स व्हाई. फॉलोड? एंड वो इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन अलग ही होगा. यस. सो जिसको डाउट था ना सर कितनी स्पेस छोड़नी है, so did you get the clarity about space as well?
कौन से स्टॉक में कितनी छोड़नी है, ठीक है। सो कैन आई से नाउ माय WIP स्टॉक इन दिस क्वेश्चन इज RM would be 15,000, but labor would not be 2,500. Labor would be 2,500 का 50%, because only 50% task is done by the labor yet. So can I say 1250 होगा. And overheads, only 50% overheads का काम हुआ है प्रोसेस में, 50% are still left. So can I say this would be 2,500, correct. तो अब मेरा WIP का स्टॉक रिवाइज्ड अमाउंट कितना हुआ, 15, 16, 18, 18,750. Followed everyone, 18,750. So in this standard assumption, मैं और एक स्टैंडर्ड assumption ऐड कर दूं of this chapter. In absence of specific information, percentage completion would be 100% for raw material. It means सारे raw material जो फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए लगते हैं वो सारे मैंने प्रोसेस में डाल दिए. दिस इज व्हाट 100% कंप्लीशन ऑफ रॉ मटेरियल मीन. इट मींस फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगेंगे वो सारे मैंने डाल दिए. तो रॉ मटेरियल का काम हो गया वहां पे. अब लेबर एंड ओवरहेड्स का काम चालू होता है, बट दे आर आलसी, दे आर डूइंग जस्ट 50% ऑफ देयर टास्क. 50% labor, 50% overheads. Again, on this assumption to be used only unless otherwise specified. If question says कि 80% of raw material are issued in the production and 40% of labor and overheads have done their work, then use this specific information. तब 100-50-50 मत लेना, तब 80-40-40 लेना. So read the question carefully and accordingly see whether to use standard assumption or whether to use specific information. Followed? So can I say मेरे WIP की फॉर्मूला बन गई, क्या बनी? WIP की फॉर्मूला इज नथिंग बट RM into WIP holding period divide by 12 into percentage completion of RM plus labor into WIP holding period divide by 12 into percentage completion of labor plus overhead into WIP holding period divide by 12 into percentage completion of overheads. ठीक है. This percentage completion differentiates the meaning of WIP and FG. वरना तो सेम ही आंसर आता, बिकॉज दोनों का बेस सेम है. Followed? So this was a tricky part. No, पर again, if COP and COGS कब different, ideally they would be coming same only. You have to use percentage completion irrespective whether COP and COGS is different or not. Huh? You have to use this. Sir, in 50% answer is different. Sorry, which answer is different? कौन सा आंसर डिफरेंट है? अब कौन से आंसर है? मैंने आंसर अभी तो सोल्यूशन मैंने तो पूरा किया भी नहीं है, तो आप कौन से आंसर की फाइंड आज बात कर रहे हो? आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय सोल्यूशन येट. जस्ट बी विद मी, डोंट ट्राई टू गो अहेड. फिलहाल अभी इतना रॉ मटेरियल स्टॉक समझो, WIP स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है वो समझो, FG का स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना है वो समझो. WIP और FG के बीच डिफरेंस क्या है तो परसेंटेज कंप्लीशन में वो समझो. ओके, सो WIP में हमें परसेंटेज कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करना है. तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड assumption ऑफ परसेंटेज कंप्लीशन अंडर WIP? 100-50-50. इतना समझो.
ठीक है, डोंट ट्राई टू सी द सोल्यूशन, डोंट ट्राई टू गो अहेड, जस्ट बी विद मी एंड फॉलो माई एक्सप्लेनेशन. ठीक है, सो दिस इज डन, एफ जी इज डन, 67,500. करेक्ट. अब हम आते हैं रिसीवेबल्स पे. सो यहाँ पे अब मैं एक्चुअल ले लू वापस. इट वॉज 3 months इन आर केस. 3/12 which comes to 67,500, which comes to 67,500. FG is done. Now receivables. Can I say debtors, customers are based on sales? Yes or no? So receivables की formula क्या बन जाएगी? With the same logic, can I say it is nothing but sales? Now we don't call as debtors holding period, we call as average collection period, or you can say credit period allowed to customers. Average collection period divide by 12. ठीक है. So how much is my sales? 3 lakh. Average collection period means मैं मेरे कस्टमर को कितना क्रेडिट देता हूं. So I'm giving 3 months of credit to my customers. So can I say this is nothing but total sales for 12 months is 3 lakhs. Proportionate to 3 months of this sales is my debtors. Are you following everyone? रेशियो में भी आपने यही किया हुआ है इन द रेशियोज चैप्टर. सो 3/12 4 कितना आ रहा है? हाउ मच इज माय रिसीवेबल्स कमिंग? 75,000. Okay, 75,000. So I found my debtors as well, which comes to 75,000. And ये debtors कैसे आया? Receivables is nothing but sales into average collection period, or let me write it in short terminology, ACP. ACP is nothing but credit allowed to your customers. ठीक है, divide by 12. So my gross working capital, अच्छा, cash and bank balance directly given in the question 20,000. Are any of the expenses paid in prepaid or paid in advance? Wages and overheads दिया है, but are they advance or lag? Outstanding. They are outstanding. So can I say there is no other current asset? तो बातों बातों में we found gross working capital, which is nothing but 30,000 of RM stock plus 18,750 of WIP stock plus 67,500 of FG stock plus 75,000 of receivables and plus 20,000 of cash. Total is how much? 211,250. So my gross working capital comes to 211,250. Understood? 211,250. Now let's target payables. ये payables माने sundry creditors. तो sundry creditors से can I say I would be purchasing raw materials? Yes or no? In manufacturing industry businesses, आपकी खरीदी क्या होगी? आपकी खरीदी रॉ मटेरियल की होगी. तो payables would be based on raw materials. ठीक है. So payables with the same logic. Raw material purchased, raw material purchased. परचेज पे मेरे पेबल्स बेस्ड होते हैं इनटू एवरेज पेमेंट पीरियड. एवरेज पेमेंट पीरियड इज नथिंग बट क्रेडिट अलाउड टू मी बाय माय सप्लायर्स डिवाइड बाय 12. सर रॉ मटेरियल परचेज कैसे ढूंढते हैं? It is nothing but if you remember or if you recollect the formula of raw material consumption. रॉ मटेरियल कंजम्पशन क्या था? ओपनिंग आरएम था प्लस आरएम परचेज था लेस क्लोजिंग आरएम था. यस और नो?
Again, no specific information is given in this question. So my opening RM and closing RM will remain same. All activities, standard assumption number one, yaad karo. All activities accrue evenly throughout the year. And they have also given this, that activities accrue evenly during the month. This is indirect hint that all activities accrue evenly throughout the year. So when I say मेरा opening RM and closing RM would remain same in that case, so ये लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता. In other words, my raw material consumption is what my raw material would be purchased. Followed? So यहाँ पे can I say मेरा raw material purchase would be 1,80,000. That 1,80,000 is for entire 12 months. Proportionate to 2 months of this raw material purchase is my creditors. Are you following? So 180 into 2 by 12. कितना आ रहा है अमाउंट? 30,000. 30,000 is my payable. Proportionate to 2 months is my payment period. Is my payables. So formula payables की क्या बन गई? Can I say it is nothing but raw materials purchased into average payment period is termed as APP divided by 12, which comes to 30,000. Followed? Other current liabilities में you will find outstanding expense in most of the question. कभी कभार क्वेश्चन में बैंक ओडी भी होगा, कभी कभार क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म लोन भी होगा. So accordingly you need to calculate other current liability. As far as this question is concerned, we have two outstanding expense. Outstanding wages है and outstanding overheads है. Following? Can I say they are outstanding for a period of 1 month? Means इस month में कमाया हुआ wage will be paid next month. इस month में incur किया गया overheads would be paid next month. So can I say what would be the formula? This formula is nothing but wages into outstanding period. कितने month के लिए they are outstanding? Divide by 12. Overheads है तो overheads into outstanding period divide by 12. Simple formula logic for all the components. ठीक है? This is number 5. Other current liability. Okay. So outstanding wages. Can I say my wages cost is 30,000? डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट कितना था? कॉस्ट शीट से मिला मुझे 30,000 एंड ओवरहेड्स का इट इज 60,000. They are outstanding for 1 month. So 30,000 is the cost for entire 12 months. But proportionate to 1 month is outstanding wages. Means मेरे बैलेंस शीट के एंड डेट पे आओ. इफ आई प्रिपेयर माय बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने दिखेंगे मुझे? तो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग, बिकॉज इट इज नॉट क्लियर टिल 31st December. फॉलोड? 2,500. Outstanding overheads 60,000 into 1 by 12 comes to 5,000. 5,000 is my. So this was 2,500. This was 5,000. So ये सब मैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल 211,250 में से माइनस करूं. If I subtract 20, sorry, not 20, but कहाँ गया? 30,000 of payables and 7,500 of other current liability. So what is my net working capital, or I would say excess of current asset over current liability? This is nothing but excess of current assets over current liabilities. 173,750.
So this is the estimated amount that I would need in the form of working capital in my coming year. Understood? अब इसमें सेफ्टी मार्जिन कुछ बोला है? Is any information given on safety margin in the question? There is no safety margin information, so we will not assume by ourselves. We will take it as nil. So this is the amount of working capital that I will raise. Followed 173, 750. So safety margin, if not given in the question, तो you have to ignore. अपने आप से मत ले लेना. Understood how to approach the question of working capital? Step number 1, prepare the format. Step number 2, prepare the cost sheet, which will help you, which will serve as a source document. Step number 3, apply the formula of individual line items and get your statement ready. Step number 4, important note, WIP में परसेंटेज कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करना है. डोंट फॉरगेट दिस. ठीक है? सो WIP और FG के बीच यू हैव टू कीप मोर स्पेस. फॉलोड एवरीवन? Any queries, any concerns? सर हमारा आंसर तो अलग आ रहा है. ओके, लेट्स आई विल एक्सप्लेन यू. दिस इज नेक्स्ट टॉपिक. 30,000 पहले तो रॉ मटेरियल मैच कर लो. रॉ मटेरियल 30,000. यस, करेक्ट. WIP 18,750. 18,750 तो आया हमारा भी. 18,750 आया ना WIP. Total WIP is 18,750. So again this is correct. FG is 67,500. Again it is correct. सर रिसीवेबल्स में चेंज आ रहा है. आपका 75 आया सर एंड इसमें 67,500 आ रहा है. कैश इज सेम 20. क्रेडिटर्स 30,000 बराबर आया. 2,500 वेजेस आउटस्टैंडिंग बराबर है एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स 5,000 बराबर है. सर आपने यहाँ पे डेटर्स में गलती करी है. डेटर्स रॉन्ग सर, आपको नहीं आता कैलकुलेट करना है. कहने से द ओनली डिफरेंस हियर इन दिस क्वेश्चन इज डेटर्स. You know their logic is also correct. This is my next explanation का part. It is not wrong. Ideally, it is correct. 67,500 ही आना चाहिए. But let me tell you, to estimate working capital, you have two approaches. One is total basis and one is cash cost basis. क्या बोला सर आपने? One is total basis, one is cash cost basis. Oh, ये क्या हुआ? Just a second. कहाँ चला गया मेरा PPT? बेटा let me do Control Z. Okay. ये है. Okay, everything is there. Okay. So there are two approaches, or I would say two techniques or two methods to calculate estimation of working capital. One is total approach and one is
कैश कॉस्ट अप्रोच, कैश कॉस्ट बेसिस। हमने अभी जो मेथड फॉलो करी ना, दैट इज टोटल बेसिस। इंस्टीट्यूट ने जो सोल्यूशन किया है ना, दैट इज कैश कॉस्ट बेसिस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू, आई विल एक्सप्लेन यू दैट एज वेल। ठीक है। टोटल बेसिस मीन्स you include everything, you include every cost, whether the cost is cash cost or non-cash cost, you have to include everything, because the technique, the name of the technique is total basis. So let's say raw material hai, in this question it was raw material, direct labor था, factory overheads है। Now this factory overheads, can I say factory cost में तो depreciation भी include होगा या हो सकता है, yes or no? And there would be other factory overheads in the form of cash cost. Following? Total would be my cost of production, COGS. I will add admin expense. I will add selling and distribution. I will get cost of sales. I will add profit and I will get sales. ठीक है। Now cash cost basis में हमें क्या करना है? You have to focus on the name. What is the name? नाम में क्या है? Cash or cost? Include only the cost. First of all, you have to just consider only the cost, and that too only those costs which are paid or will be paid in cash. Are you following? What does cash cost basis say? Cash cost basis say, number one, include or consider only the cost. So profit को तो आप निकाल ही दो. Profit is not a cost. Profit is something over and above cost. Are you following? So पहले तो just include the costs. Cost may be only those costs that are paid or can be paid in cash. Are you following? So can I say if I follow cash cost basis, मुझे रॉ मटेरियल इंक्लूड करना पड़ेगा बिकॉज इट विल बी पेड इन कैश। आज नहीं तो कल वो कैश में ही पेमेंट होगा। ए कैश इंक्लूड्स बैंक चेक एवरीथिंग। लेबर है, कैन आई से लेबर विल ऑल्सो बी आइदर पेड टुडे or in future in cash form only. But depreciation is not my cash cost, it is a non-cash expense. Means ये जो depreciation का amount होगा ना, वो मेरे जेब से खर्च नहीं हो रहा है, जेब से रियल फॉर्म में मनी नहीं जाने वाला है। Are you following? So if we follow cash cost basis of working capital estimation, हम फैक्ट्री ओवरहेड में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकाल देंगे, उसको बाहर कर देंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन में भी उसको फेंक दिया था ना, वैसे ही इसमें भी वी विल थ्रो इट आउट। फॉलोड एवरीवन? अदर ओवरहेड्स, अदर कैश फैक्ट्री कॉस्ट वी विल इंक्लूड, बिकॉज आज नहीं तो कल वो कैश में ही पेमेंट होने वाला है। नेक्स्ट, एडमिन एक्सपेंस, आज नहीं तो कल पेमेंट इन कैश। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, आज नहीं तो कल पेमेंट इन कैश। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया। प्रॉफिट, ए प्रॉफिट इज नॉट योर कॉस्ट, ये तो आएगा ही नहीं कंसिडरेशन में। आर यू फॉलोइंग? एंड सेल्स विल नॉट कम इनटू कंसिडरेशन। So in that case, if we follow cash cost basis of estimation, can I say my debtors over here instead of sales will be based on cost of sales? Yes or no? Are you getting this? सेल्स कब यूज करेंगे? व्हेन टोटल बेसिस इज फॉलोड। प्रॉफिट को भी स्थान देना है, डेप्रिसिएशन को भी स्थान देना है, इफ वी फॉलोइंग टोटल बेसिस। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग टोटल बेसिस एंड इफ यू आर फॉलोइंग कैश कॉस्ट बेसिस, तो रिसीवेबल्स में अब हम सेल्स नहीं ले सकते,
We have to take cost of sales. Because can I say sales की वैल्यू जो होगी उसमें प्रॉफिट एलिमेंट भी होगा. And my amount is not blocked in profit. You always see how much is the amount blocked in debtors. The actual amount blocked in debtors is your cost of sales. Following? दूसरा लॉजिक. Whenever, see, once this amount is estimated, once this 177 जो भी आ रहा था, आ गया. Once this 173 750 is estimated, हम क्या करेंगे, ये अमाउंट को हम बैंक के पास, ये वर्किंग हम बैंक के पास लेके जाएंगे फॉर फाइनेंसिंग पर्पस. करेक्ट. थिंक लॉजिकली. विल बैंक फंड यू फॉर डेप्रिसिएशन? जो खर्च आपके जेब में से ही नहीं हुआ है, विल इट फंड फॉर दैट? ऑब्वियसली नॉट. यस और नो? Will bank you profit? Again, is profit incurred out of your pocket? No, na, it is not incurred out of the pocket. Only the cost जो actual जेब से जा रहा है, फंडिंग उसकी होती है. Understood? So cash cost basis ideally is more logical method for estimating the working capital needs. So in this question, can I say अगर मैं cash cost basis follow करूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वेर इज माई कॉस्ट शीट? हाँ, यहाँ पे कैन आई से आई हैव टू इंक्लूड रॉ मटेरियल, आई हैव टू इंक्लूड लेबर. ए फैक्ट्री ओवरहेड्स में आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू रिमूव डेप्रिसिएशन, बट इज एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट डेप्रिसिएशन इज गिवन? ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला है कि ओवरहेड्स कंसिस्ट 10% of depreciation or overheads consist of 50,000 of depreciation, something like this? No. So we have to assume that entire overheads is cash cost. ठीक है? So COGS, COP आ गया. Admin selling कुछ नहीं है, cost of sales आ गया. But now we will not include this profit. So can I say my debtors, instead of valuing debtors on 3 lakh, I will value it on 2,70,000 now. Yes or no? If I follow cash cost basis, correct? So my revised value of debtors will be, this is total basis. If I'm taking 3 lakh total sales, then total basis. If I'm following cash cost method, then my debtors will be valued on 270 into 3 by 12. कितना आ रहा है? 67,500. Yes or no? So institute has followed cash cost basis over here. उनका जो डेटा 67,500 आया है ना, it is by following cash cost basis. ठीक है? So understood both the methods? Any doubts? Any concerns? सर एग्जाम में कौन सी मेथड फॉलो करनी है? तो एग्जाम में चेक इन द क्वेश्चन कि एग्जाम में हैव दे गिवन यू सम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दैट फॉलो टोटल बेसिस, फॉलो कैश कॉस्ट बेसिस. ऐसी इंफॉर्मेशन दी है आपको, देन गो एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वेश्चन. अंडरस्टूड? सर ऐसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं दी हो तो क्या करने का? तो इन दैट केस सर्च फॉर सम इनडायरेक्ट हिंट्स. इनडायरेक्ट हिंट्स किस प्रकार की होगी? तो इनडायरेक्ट हिंट्स वुड बी समथिंग लाइक दिस, दैट कंपनी wants to, something like this, company wants to estimate its working capital so that it can raise funds from banking and financial institutions. So this is banking and financial institution is nothing but indirect hint given to you that you have to follow cash cost basis. Hey, are you following? Because bank or financial institution will not fund you for profit. Neither they will fund you for non-cash expense. So these are some indirect hints.
that you have to read the question and catch it. सर ऐसी hints भी ना दी हो जैसे इस क्वेश्चन में there is no hints given in the question, no specific hints. बस इतना लिखा है दे वांट टू नो द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. सो ऐसे क्वेश्चन में यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड, जस्ट मेंशन इट इन योर सोल्यूशन. जस्ट मेंशन इट इन योर सोल्यूशन. ठीक है, जैसे इस मेथड में मैंने टोटल बेसिस लिया, सो आई विल मेंशन इट एट द टॉप इटसेल्फ ओवर हियर. टोटल अप्रोच या टोटल बेसिस फॉलोड यूजिंग टोटल बेसिस. इफ यू आर फॉलोइंग कैश कॉस्ट बेसिस, यहां पे ऊपर ही लिख दो यूजिंग कैश कॉस्ट बेसिस. गेटिंग ऑल द क्लैरिटी स्टूडेंट्स? एनी क्वेरीज, एनी कंसर्न्स? बट क्वेश्चन इज बिग. हाँ, वर्किंग कैपिटल के क्वेश्चन बड़े ही होते हैं. Crystal clear? Understood the meaning of the term working capital, understood the learning objective, understood the format of working capital, understood the assumptions, standard assumptions of this chapter, understood the format of cost sheet, understood the formulas of respective line items. अच्छा, फॉर्मूलाज किस लॉजिक से डिराइव्ड हुई है उसमें भी क्लैरिटी मिल गई. क्लियर? So this was very important. Moving ahead, acha, understood the basis, the approach to be followed. So logical basis is cash cost basis. ठीक है, more logical is cash cost. See, can you see here it has been assumed that inventory level is uniform, means accrue evenly throughout the year. Therefore, opening inventory equals closing inventory. Our standard assumption number one. All activities accrue evenly throughout the year. Sir, in exams, can I do cross? You can do cross multiplication without formulas, but it will take more time. Unnecessary, you will consume more time in only this question. So better to understand the logic through cross multiplication, but use the formulas. समझने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझो. Otherwise, it will take your time. It will take unnecessary extra time. ठीक है, so working capital estimation on based on cash cost. This explanation is nothing but what I've explained to you just now. Sundry debtors is 75,000 if you see in the question, but cost of sundry debtors is 60. No, they have taken example of 1 lakh. If sundry debtors is 1 lakh, our cost of sales is 75,000. Then actual amount of funds block would not be 1 lakh, because this 1 lakh would include profit element as well. So profit में कभी amount block नहीं होता है. Amount is blocked only in the cost. So can I say debtors will be valued on 75,000. Again, there are some non-cash costs like depreciation. So suppose out of 75,000, 5,000 is depreciation. So it is obvious that actual fund block is not 75,000. It would be now 70,000 only. Understood? Following. So let's say in our current example, let's assume that this factory cost of 60,000 includes 10,000 of depreciation. Just let's assume this for the time being. So can I see if I follow cash cost, मुझे यहाँ पे 60 नहीं, मुझे यहाँ पे 50 लिखना पड़ेगा.
अच्छा, अगर मैं 50 लिखता हूं तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सीओजीएस सब चेंज हो जाएगा. आर यू फॉलोइंग? नाउ दिस विल बी 260. फॉलोइंग? सो माय फिनिश गुड्स का वैल्यू विल चेंज, माय डब्ल्यूआईपी का स्टॉक वैल्यू विल चेंज. Followed everyone, and my cost of sales will change. Understood? This is 70,000. So they have just tried to explain you what do you mean by cash cost. Still, we have time of 10 minutes. Let's see illustration number 4. If time permits, we will complete entire question. Or if time is not permitting, if there is time constraints, we will just discuss this question. The following annual figure relates to XYZ company. ठीक है? So XYZ company का sale is 36 lakh. What does this 2 months credit mean? Can I say this is nothing but average collection period? Yes or no? आज अगर मैंने सेल किया तो उसका पैसा मुझे 2 months बाद मिलेगा. ACP, this is nothing but ACP. Material consumed, raw material consumed is 9 lakh. Suppliers extend 2 months credit. So tell me, think carefully and tell me, is this my raw material holding period या this is average payment period? बताओ, ये 2 months है, ये मेरा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड है कि एवरेज पेमेंट पीरियड है? एपीपी, yes, average payment period. Don't get confused by considering this as raw material holding period. Wages paid 1 month lag in payment. Can I say outstanding wages? And how much is the outstanding period? 1 month. Correct. Cash manufacturing expenses are 960, and this expense again are paid 1 month in arrear. A arrear is again nothing but outstanding. But my question to you, ये 960 में क्या डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है कि नहीं है? दिस इज माय क्वेश्चन. नो, बिकॉज दिस इज कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. अंडरस्टूड? Administrative expense, 1 month lag in payment. So admin expense and selling expense इस question में है, but admin expense is outstanding for 1 month. तो कहना है इसे to the extent of 1 month ये other current liabilities में आ जाएगा. Sales promotion expense paid quarterly in advance. Total sale promotion is 120, proportionate to 1 quarter. That is proportionate to 3 months. It is in advance. तो कहना है से अब अदर करंट असेट भी आ गया, प्रीपेड एक्सपेंस भी आ गया. Followed everyone? So this is a comprehensive question. The company sells its product on GP of 25%. Depreciation is considered as a part of cost of production. It keeps 1 month stock of each raw material and finished goods and cash balance of 1 lakh. What does this mean? ये 1 month क्या है? It keeps 1 month stock of raw material and FG. ये क्या है? Holding period. This is not WIP. This is raw material का holding period. And FG का holding period. दोनों का holding period is same, 1 month. Correct? This is not WIP holding period. Na? This is raw material holding period of 1 month and FG holding period of 1 month. Add 20% safety margin. Compute the working capital requirement on cash cost basis. Can I say this question has specifically told you which method to follow? Yes or no? And they have told you ignore WIP. ये हम वैसे भी इग्नोर करते क्योंकि WIP होल्डिंग पीरियड कुछ बताया ही नहीं है. फॉलोड? WIP होल्डिंग पीरियड की कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी नहीं है तो हम इग्नोर ही करने वाले थे. बट दे हैव जस्ट गिवन दैट एज वेल कि इग्नोर WIP, तो हम इग्नोर करेंगे. तो कहना है से स्टेप 1 is to prepare what? Is to prepare our estimation of working capital का format. Understood?
वो फॉर्मेट रेडी है तो हम दूसरा फॉर्मेट तुरंत ही बनाएंगे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट का, कॉस्ट शीट का. कैन वी स्टार्ट एटलीस्ट टू प्रिपेयर द कॉस्ट शीट टुडे? वर्किंग नोट वन, cost statement. And can I say this cost statement I have to prepare on cash cost basis? Yes or no? Material consumed, instead of units and per units, they have directly given the cost. Material consumed is 9 lakh. Wages is 7,20,000. ठीक है. कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, हमें कैश कॉस्ट बेसिस के लिए कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ही चाहिए. A manufacturing expense is nothing but factory overheads, cash factory overheads. Different terminologies would be used in different questions, but मतलब एक ही होता है. These all are pet names. 960. हाँ, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता, सिर्फ सिर्फ ऐसा बोला था कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस इज 960, तो उसमें से हम डेप्रिसिएशन एलिमेंट निकाल देते हैं. ठीक है. So my total cost of production, and this will be my COGS, because of the standard assumption number one, all activities accrue evenly throughout the year. कितना आ रहा है? 25,80,000. करेक्ट. इसमें हम एडमिन ऐड करेंगे. एड एडमिन एक्सपेंस गिवन इन द क्वेश्चन, हाउ मच इट इज? 2,40,000. Sales promotion is nothing but selling expense. How much it is? 1,20,000. So can I say my total cost of sales would be how much? 2520 है कि 80 है? 9 plus 9, 18 plus 7, 2580 है. 2580 plus 240. So 2940 is the total. Correct? Since we are following cash cost basis, your cost sheet will end at cost of sales. Profit की कोई जरूरत नहीं है, sales की कोई जरूरत नहीं है. So end it till here. ठीक है. Everyone followed? अब क्या करना है? अब हमें ये सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प लेके स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ढूंढना है. हाउ टू फाइंड स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल? कैन आई से रॉ मटेरियल इज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इनटू एवरेज RM होल्डिंग पीरियड डिवाइड बाय 12. आर यू फॉलोइंग दिस? अच्छा, WIP में कितनी वैल्यू आएगी? WIP में शून्य आएगा. व्हाई? बिकॉज वी हैव टू इग्नोर WIP. फॉलोड? फिर आते हैं हम FG स्टॉक पे. कैन आई से FG इज बेस्ड ऑन COGS. सो COGS इज 2580 मल्टीप्लाई बाय FG होल्डिंग पीरियड विच इज 1 month डिवाइड बाय 12. फिर आते हैं हम डेटर्स पे. डेटर्स इन दिस केस इफ वी फॉलो कैश कॉस्ट बेसिस, कैन आई से डेटर्स विल बी वैल्यूड ऑन कॉस्ट ऑफ सेल्स. So debtors will be 2940 into ACP, which is 2 divided by 12. Cash given is 1 lakh. Acha, we have other current assets in the form of prepaid selling expense. So can I say it is quarterly, means 3 months in advance. So 120 into 3 by 12 will be my prepaid sales and promotion. फिर हम आएंगे पेबल्स में. कैन आई से पेबल्स में आई विल परचेज रॉ मटेरियल्स. So raw material purchased would be 9 lakh multiplied by APP, 2 months divided by 12.
फिर हम आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर थ्री ओवर ईयर, वेजेस भी आउटस्टैंडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग भी आउटस्टैंडिंग है एंड एडमिन भी आउटस्टैंडिंग है। तो ये सबका टोटल लेके ऑल ऑफ देम आर आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ। इफ यू सी, all of them are in arrears for 1 month. The total like 1 by 12 will be my outstanding expense. Simple. Did you understand the flow? हमारा estimation of working capital का format कैसे बनेगा? Clear? So you can try this at home as well. और otherwise मैं ये solve next session में तो करने ही वाला हूँ. But I would suggest कि at least try by yourself and see whether you are able to get the answer or not. ठीक है? So any doubts in today's session? Any clarity you would like to want from my side? Any concerns? In dividend chapter, MCQ is given in gram and dot approach. Okay, in next session, I will give the formula of gram and dot as well. उस पे कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, ना ही पूछे हैं, ना ही है आपके सिलेबस में, मींस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साइड में, बट स्टिल आई विल गिव द फॉर्मूला गिवन बाय ग्राम एंड डॉट। ठीक है, विद दिस वी एंड टुडेज सेशन, वी विल मीट ऑन सैटरडे अगेन। हाउ टू अंडरस्टैंड बिग प्रॉब्लम्स, ये कौन से बिग प्रॉब्लम्स? यस, थैंक यू कुलदीप फॉर योर काइंड वर्ड्स। I always try to explain in such a way that even layman can understand who doesn't have financial background. Aditya, which big problem are you talking about? Big problems, पता नहीं। 3 AI आया? 3 सर, कौन सा 3? Illustration 3 you are talking about? Not getting your query. Illustration 3 this is a normal problem, हाँ? Working capital में इतना तो आएगा ही. You cannot consider this as big. Working capital is generally asked for 6 to 8 marks, so इतना बड़ा problem तो होगा ही. Okay, tech team, we are ending today's session. Yeah, thank you, Linga. If you solve entirely correct, then full marks मिलेंगे. सब सही है तो full marks ही मिलेंगे ना. Why will they cut the marks? Hey, why such questions are you asking? This is baseless, I feel. कितने मार्क्स मिलेंगे? सब बराबर है, सब सही है तो फुल मार्क्स, सब गलत है तो 0 मार्क्स, कुछ सही है कुछ गलत है तो अकॉर्डिंगली यू विल गेट द मार्क्स. Tech team, we are ending today's session. Huh? Thank you. No one in the tech team. Yeah, yeah. Thank you.